About the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Shared multiple dossiers of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible terrorist by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people which is paramount and cannot be compromised. As a responsible member of the international community, Pakistan upholds the principle Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Country and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. The Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. At the WEF, Prime Minister participated in the informal gathering of the World Economic Leaders and delivered keynote address at an event titled Trade, Tax, $1 Trillion Promise, and held meetings with participating leaders on the sidelines. Foreign Minister Jalil Abbas Jilani is in Kampala, Uganda, to participate in the 19th Summit of the Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement and the 3rd South Summit of the Group of 77 in China. His participation in these important summits is a reflection of the high priority Pakistan attaches to promoting cooperation among the Global South, including on issues related to sustainable development. The Foreign Minister has also cut short his visit in light of the recent developments. The 14th of January marks a painful milestone for the human conscience. It was the 100th day of Israel's war and 24,000 lives in Gaza, a toll that is escalating with each passing day. The staggering number includes almost 10,000 children and over 6,700 women. The indiscriminate violence by Israel has to end. Humanity must prevail. The international community should play its part in saving the people of Palestine from the barbaric acts of the occupation authorities. The month of January carries painful memories of 3 massacres committed by the Indian forces in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir during the 1990s. Over 50 innocent people were martyred and hundreds were injured when Indian troops had opened indiscriminate fire on peaceful protesters in Gaukadal area of Srinagar on 21st of January 1990. A few days later, on the 25th of January 1990, at least 21 unarmed Kashmiris were martyred by the Indian troops in North Kashmir's Handwara town.
On 27th January 1994, a day after India's Republic Day, Indian troops massacred 27 civilians in Kupwara town. We remember the martyrs of these massacres and pay rich tributes to their sacrifices. The perpetrators of these massacres should be held accountable. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you. तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में मरबूत कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म की जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा से अपने दिफा का हक रखा है और आज भरपूर अंदाज में उसका जवाब दिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सलामती और खित्ते की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम उठाया है। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच प्रेस ब्रीफिंग दे रही हैं। उनका कहना है पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। To answer the questions that I like. So with that, let's start with इससे शुरू करते हैं। हाँ जी, खालिद साहब से शुरू करते हैं आज। मैडम, दोबारा से ईरानी फोर्सेस जो हैं वो तैयारी कर रही हैं और इतलात यही है कि उन्होंने दोबारा से मिसाइल जो हैं वो रेडी की है। अगर वो इस तरह की दोबारा ये करते हैं, हरकत करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उसका जो फौरन वही जवाब देगा जो पहले आज दिया है? I would not like to indulge in speculation. Pakistan has said that we would like to have peaceful relations with all countries in the region, including with our neighbor Iran. And we have also said that Pakistan's security and sovereignty is sacrosanct, and Pakistan remains ready and is willing to protect itself. हाँ जी, एक सवाल। Thank you, ma'am. As there was an earlier statement made by you that Pakistan carried out strikes, would you like to share details of these strikes, whether it was through regular Pakistan Air Force or through drones or missiles, and what are the details of casualties? Thank you. It is my understanding that these details will be coming soon from ISPR, so I will not indulge in operational details. Ji Azad sahab. Irani state media has recently reported that they have also sought explanation from Pakistan, although they have attacked it first and we have retaliated. But their state media is saying that they have sought some kind of explanation from Pakistan. Have you received any kind of communication from Iran? As you know, this incident took place this morning, and at this point I'm not aware of any contact that took place in the last 2-3 hours. Yes, our friend from Irna. Salazar from Iranian Eastern Youth. Ma'am, there are some reports regarding some countries trying to de-escalate the tension between two brotherly countries. So is there any... Thank you very much. As I said earlier, Pakistan considers the people of Iran as our friends and brothers, and we have no interest in escalating any situation, and we hope that adversaries understand this, and we also believe that acts like the one which took place a couple of nights ago create difficulties and give the adversaries of our friendship the pretext to create more difficulties
in the region. Ali Hussain. Ji, thank you, ma'am. Ali Hussain from Business Recorder. Iran violated Pakistan's sovereignty and carried out strikes inside Pakistan, and Pakistan in response retaliated and carried out the same strikes inside Iran. What next? Is there any channel of communications between the two countries currently to de-escalate the situation, or where both the countries are heading toward? Thank you. As I said earlier, Pakistan has also always emphasized dialogue and cooperation, and we have always chosen a paths of dialogue. We also believe that dialogue and cooperation is essential for confronting common challenges, including the menace of terrorism. And we would like to continue to engage with our neighbors to combat this menace and to ensure that peace prevails and sorry, मैं तो सवाल मैंने क्या कहा? We will continue to engage with our neighbors, including Iran. If we are talking about Iran, we will continue to engage with our neighbor Iran to ensure that peace prevails and there is and that the two countries make concerted and coordinated efforts to combat the Giannis. Thank you so much, ma'am. Has there been any efforts for a third-party mediation by regional stakeholders? And if so, what is Pakistan's response? Any countries that you would want to mention if there has been an effort at all? Thank you. I am not aware of third-party mediation, as you mentioned. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point, I am not aware of any third party stepping forward in this context. Jalil Saab. China has urged restraint, asking Pakistan and Iran to exercise restraint. Has China approached Pakistan and Iran for any mediation? Because China is a very close friend of both Pakistan and Iran. And earlier they also mediated to escalate the situation between Saudi Arabia and Iran. What are your comments, please? As I just said, I am not aware of any mediation by any third party that has taken place or is on the horizon. हाँ जी, रास्ता को दें। थैंक यू सो मच मैम। ये बता दीजिए कि ये जो ऑपरेशन समाचार था, इसमें BLA और BLF के हाइडआउट्स को टारगेट किया गया या नहीं? Again on this question, please wait for an advice from ISPR, which will be coming shortly. हाँ जी, निज़ामी साहब को। Thank you, madam. मैडम, हमने बर्ग अमेरिका सुना, बर्ग इजराइल सुना, एक नई आपने नाम दिया है बर्ग शर्मचार। इसकी कोई खास वजह है? ये फारसी में मैसेज दिया गया है, इंटरेस्टिंग नेम है। I am not an expert in Persian language, so I cannot comment on its how interesting it is. But this is a code name, which is, as you know, it was an intelligence-based operation, and our
मैडम को दें, सारा को. Thank you. So in your opening remarks, you said that the terrorists that were killed identities been Pakistan for the last with Iran authorities, and we have shared with them of these terrorist hideouts, and the statement that जी सुमेरा. तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की बलोच प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी. उन्होंने कहा कि करने की इजाजत नहीं देगा. पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में मरबूत कार्रवाई की है. पाकिस्तान सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया. उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे. ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए. कई वर्ष से ईरान को दहशतगर्दों की पनाहगाहों से आगाह कर रहे थे. इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी. उनका कहना था पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा. पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में मरबूत कार्रवाई की. पाकिस्तान सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया. दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे. ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए. कई बरस से ईरान को दहशतगर्दों की पनाहगाहों से आगाह कर रहे थे. ईरान की जानिब से फौरी इकदामात न करने पर कार्रवाई की गई. ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं. आपको बताना है इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी. उनका कहना था पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा. पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में मरबूत कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं. आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का उसूल था. पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाता है. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है. UN चार्टर्ड उसूलों पर रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी शामिल है. पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा. पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का यह भी कहना था कि ईरान ब्रादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं. हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है. आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे. पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है. लेकिन जब बात पाकिस्तान के ऊपर आती है तो पाकिस्तान किसी भी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है और न ही आगे भी माजी में भी हुआ और न आगे जाके भी पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत को बर्दाश्त करेगा. पाकिस्तान ने हर किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी जाकर पाकिस्तान जो है वो इसी तरह के एक्शन को प्रिटेंड करेगा. आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी. उनका कहना था पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा. पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में मरबूत कार्रवाई की. पाकिस्तान सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया. दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे.